Hello students, today we are going to see the exercise question, textbook questions. Exercise number 1.2. In previous video, we discussed about the first exercise and also about introductory part for the second exercise. Okay, now we'll see the first question of exercise number, that is 1.2. That is a true false. First question, we have to state whether it is a true statement or false statement. First question of it, first bit of it, every irrational number is a real. Irrational number you can represent either by q dash, q bar or complement. Every irrational number, this is irrational number. Every irrational number is a real. This is a true statement because the real number consists of real number set. It consists of rational and irrational numbers. रैशनल क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल क्यू सी से और क्यू डैश से और क्यू बार से, राइट. दो तीन वेज रहते हैं टू रिप्रेजेंट. दैट्स व्हाई एवरी इरेशनल नंबर इज रियल बिकॉज रियल नंबर सिस्टम या रियल नंबर कंसिस्टिंग ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल. तो डेफिनेटली इरेशनल नंबर रियल में आते हैं ना, तो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू स्टेटमेंट. तो लिखते वक्त कैसा, रियल नंबर contains rational as well as irrational number. Therefore, irrational number is a part of a real number. Therefore, it is a true statement. In this way, you have to write. Okay. Now, second example. Second bit of it. Every point on the number line is of the form root m. ये नंबर लाइन जो एवरी नंबर रहते हैं रूट m के फॉर्म में होते हैं क्या, right? Or true or straight. Every point in the number line is of the form root m, where m is a natural number. M is a natural number. देखो एग्जाम्पल्स 1, 2, 3. अब ये जो आ सकता है रूट वन को तो 1 ही लिखते हैं अपन, रूट 2, रूट 3, राइट. रूट 1, रूट 2 तो 1 भी आ सकता है. इसके बाद में ये, but if we take examples -1, -2, -3, अब ये जो नंबर है -5, -4, -3, -2, -1, these are real numbers, but these cannot be the square root of any natural number. किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नेचुरल नंबर लिया सपोज, नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं. बट दीज नंबर्स आर ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे है ना -1, -2, -3, -5, फॉर एग्जाम्पल लिखना कैसे, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज -5, -4, -3, -2, -1 आर रियल, बट दीज आर नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता, कभी पॉजिटिव हो सकता है. अगर इफ आई टेक रूट 4, उसका स्क्वायर रूट 2 आता, रूट 9 3 आता. राइट हैंड साइड में तो ट्रू रह रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स के लिए इट्स नॉट ट्रू. तो लिखना कैसे, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज -5, -4, -3, -2, -1 आर रियल, बट दीज आर नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव रहते हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नेगेटिव कैसे आ सकता है, तो किसी भी नंबर का रूट हो ही नहीं सकते ना. दैट्स व्हाई इट इज अ false statement. It is a false statement. Okay, now we'll see the third bit of it. Every real number is irrational. देखो तो हमको फर्स्ट नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ i इज सबसेट ऑफ q इज सबसेट ऑफ रियल नंबर. ओके, और इरेशनल केस में इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ r. इस डायरेक्शन में ट्रू रहते स्टेटमेंट, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन. और इस डायरेक्शन में जो आते हैं वो फॉल्स स्टेटमेंट रहते हैं. इस डायरेक्शन में स्टेटमेंट एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल, ट्रू है, बट एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, ये फॉल्स स्टेटमेंट.
अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना? एग्जाम्पल, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज what is it is it is given that actual statement is like this: every real number is a irrational. It is a false statement. Example, you can take real. Suppose if you take 3 by 2 belongs to real number, ये real है, but 3 by 2 does not belongs to irrational number set. Irrational number के set में ये belong नहीं करता, that's why it is a false statement. Actually इसके लिए true है, मतलब 3 by 2 belongs to R. False statement में एक को follow करना है, does not belongs to 3 by 2 does not belongs to. That's why it is a false statement. क्योंकि 3 by 2 rational है और real रहेगा definitely, लेकिन 3 by 2 irrational थोड़ी है, it's not irrational. Therefore this is the false statement. Statement क्या था? Every real number is an irrational, a false statement. क्योंकि अगर example ऐसा लिया 3 by 2, or you can take 3 also, 3 belongs to R ले सकते, but 3 does not belongs to C. That is a complement of rational number set means irrational. तो irrational QC से भी डिनोट करते, S से भी डिनोट करते, Q dash से भी करते और Q bar से भी डिनोट करते irrational number. ये QC से भी डिनोट करते. Irrational numbers can be represented either by S or this Q dash by or Q bar or QC. It is complement set of rational number. Got it? That's why it is a false statement. Now question number 2. Are the square roots of all positive integers irrational? Right? If no, give an example of the square root of a number that is rational. Are the square roots of all positive integers irrational? Agar suppose if we take square 1, 2, 3, 4, suppose 9, 15, 25, ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1 आता, स्क्वायर रूट लेते हैं रूट 2 रहेगा, स्क्वायर रूट 3 रहेगा, रूट 2 3, square root of 15, root 15, square root of 25 5. Some we are getting rational numbers and some numbers we are getting irrational. So that's why the square root of all positive integers is irrational. This is a false statement. Because if we take the square root of 1 is 1, square root of 2 is root 2, square root of 3 is root 3, square root of 4 is 2, it is rational. 1 is rational, 3 is rational because square root of 9 is 3, square root of 25 is 5. ये सभी रैशनल नंबर्स हैं, बट ये जो रेस्ट नंबर्स हैं these are irrational. तो इसलिए this is the false statement because square root of all positive, these are the positive integers है. Positive integers का the square root of all positive integers is irrational. That is a false statement. You can give examples in this way. Square root of 1 is 1, square root of 2 is root 2, which is a irrational. Square root of 1 is, this is rational. Right? This is a rational, this is rational, and this is rational, but these numbers are irrational. Got it? Okay. Show root 5. Yeah, represent root 5 on the number line. Already we discussed about this in previous video. Square root of 5 you can write 1 plus 4 or 4 plus 1, no problem. 1 plus 4. Okay? 1 plus 4. For that we can write 1 square because both are perfect square numbers. Just to draw one number line. Just you can. One student has asked, can we take the scale as a scale 1 unit is equals to 1 centimeter? No problem. ले सकते, but वो फिगर इतना क्लोज होगा, आर्क्स भी ड्रॉ करने नहीं आएंगे, बहुत स्मॉल आर्क्स हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द सम बिगर नंबर्स. Instead of 1, take 2 centimeter, 3 centimeter. 1 centimeter, not wrong one.
that is also correct one, you can take, no problem. But figure size इतना small आ जाता है फिर आपको identify, you can't label properly, A B भी label नहीं कर सकते, इतना small figure हो जाएगा. That's why scale change करो. Now we'll draw it. Just you can say 0. This is 1 unit, means you can take 1 right here, 1 in between these two. Just draw one perpendicular here. Then 2 means 4 centimeter. ये यूनिट्स हैं, याद रखना, अंदर के नंबर जो है ना यूनिट्स हैं. 2 यूनिट्स, वन स्केल क्या चूज कर रहे हैं, 1 यूनिट इज 2 सेंटीमीटर. 2 की जगह आप 3 सेंटीमीटर भी ले सकते, तो 3 इस 2 यूनिट्स में 6 लेना पड़ता है अगर 3 लिया होता तो, बट यहाँ 4 लिया तो यहाँ पर 2. Join it, so definitely it is √5. By taking O as a center, just you can take O. देखो 0 अपन ऐसा वर्टिकल 0 नहीं, O निकालना है तो थोड़ा सा राउंड में निकालना, डिफरेंस रहता है. तो यहाँ पे O A suppose B. By taking O as a center, O A as a radius, draw an arc. Actually, it is a part of a circle. In previous video also, I have explained. Now you can, sorry, this you can represent as P. This is √5. Lastly, you can write point P represents √5 on the number line. If you have any query, just you can write those questions. जो कुछ भी डाउट रहता है आपको, write in comment section. Comment section में you can ask me. I will reply in next video. Okay. Now this is the third question. Again same question. एक classroom activity, that is constructing. First activity is also same one for 9th standard, to construct a, that is √5 or on the number line by square root spiral. For that, what we are going to do, just 1 unit, you can take first here, spiral square root method, 90 degree. Just this is √2. Again draw one perpendicular here, take this reference line, place protector here and draw perpendicular, right? Again take 1 unit here, just join it, it becomes √3. Again take this as a reference line, just draw one perpendicular, just 1 unit, join it, this is √4. √4 means 2. Next again draw one perpendicular here, 1 unit here, join it, it becomes √5. Now this is the square root spiral method. How to represent point? Just by taking this, suppose if we label this as A, B, C, D and E. By taking O as a center and OE as a radius, just draw one arc. I said draw an arc. So arc means it is a part of a circle. ये भी radius है, ये भी radius है. That's why this distance is √5 and this point is, it is √5 and this is point P suppose. So lastly you can write, you not require this part. Huh? Point P represents √5 on the number line. In this way, square root spiral method से भी you can represent √5 on the number line. Got it? Now this completes the second exercise. In comment section, one student asked how to represent √9.3 on the number line. We'll see the explanation for representing, that is √9.3 on the number line. For that, what we are going to do, just we are going to draw one array here. आपको 9.3 रूट में एक्सप्रेस करना है ना, टेक 9.3 प्लस 1 यूनिट एडिशनल लेना, मतलब 1 सेंटीमीटर एडिशनल लेना. तो फ्रॉम दिस हियर टू हियर वी आर टेकिंग 9.3. दिस इज 9.3 सेंटीमीटर. वी आर टेकिंग एडिशनल 1 सेंटीमीटर. वी आर टेकिंग दिस एज 1 एडिशनल सेंटीमीटर. Available this as A, this is a point B.
first draw one ray, take distance 7.5 होता suppose, so first 7.5 लेना और additional 1 centimeter लेना. Okay, nextly draw the perpendicular bisector of this OB. You can take any other letter, suppose C7. Draw the perpendicular bisector of a CB. It's a perpendicular bisector, more than half लेना. Draw the perpendicular rounder, place rounder at C and B, more than half distance. Just draw one arc here, downside. I don't have space that much. I'm taking this arc somewhat close to this line. Again here, draw the perpendicular bisector of this CB, not CA. राउंडर यहाँ पे प्लेस करना, मोर देन हाफ लेना. मोर देन हाफ क्यों लेते? अगर इफ वी टेक लेस देन हाफ तो ये आर्क से इंटरसेक्ट ही नहीं करते ना, लेस देन हाफ लिए, तो इसलिए मोर देन हाफ में एक्चुअली आर्क मीन्स व्हाट, ये इंटरसेक्शन ऑफ ये आर्क से है ना, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स रहते हैं, उसके सम पार्ट ऑफ दैट सर्कल वी आर कंसीडरिंग आर्क्स. ये आर्क्स है. तो ये जो अपन ने ड्रॉ किया ना, ये एक्चुअली ये इस सर्कल का है पार्ट, ये इस सर्कल का पार्ट है, ये इस टाइप से. राइट, नाउ आफ्टर दिस लेबल दिस पॉइंट एज सपोज M. By taking CM, M as a center and CM as a radius, by taking M as a center, draw one semicircle. That will pass through A and B, C and B. And B C and B में से pass होगा. Then draw one perpendicular at A. Place protector here. Draw one perpendicular. Right? Draw one perpendicular here. Now after drawing this, suppose label this as a point. See the point of intersection of this line and arc. Now take distance in the rounder. Take A as a center or P as a AP as a radius. ये आर्क ड्रॉ करना, मतलब एक्चुअली ये पूरा सर्कल रहता है, सर्कल, लेकिन हमने इधर का पार्ट का रोल ही नहीं. ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, दिस डिस्टेंस एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली, यू कैन लेबल दिस एज अ origin. From here we are taking this distance represents root 9.3. यहाँ से distance, and this point, if we label this as a P, you can label this as a Q point, and this Q is nothing but under root 9.3. If you want explanation why we are taking this distance as a under root 9.3, now I am label explanation for it. Take this distance as x, means how we have got this OP as a root x. We'll see the explanation for it. This as a x, this is a 1, okay, so this will be root x. How we have got this as a root x, or this distance as a root x? तो उसका explanation देखो. Now take this distance CB. Take this distance CB. Not required this part, I will have, because we don't have that much space to write on the board. Now total distance CB is x plus 1, C to B is x plus 1. Make it half of it, right? This half of it will be x plus 1 upon 2, this distance from C to M. Complete distance is x plus 1, x plus 1. Make it half of it, x plus 1 upon 2. Total distance, again this also x plus 1 by 2. Same range, na? Because M perpendicular bisector पे lie कर रहे, तो definitely MB and CM are same. So x plus 1 by 2, because total distance is x plus 1. Now this distance is 1. This distance is 1 unit. Means we are subtracting this 1 from to get this OM. OM नहीं लेना, फाइंड करना है अपने को. ये OM फाइंड करने के लिए इस x plus 1 by 2 में से x plus 1 by 2 में से अपन ये 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. The LCM is 2. So x plus 1 minus 2, that gives you x minus 1 by 2. So this distance OM will be x minus 1 by 2. We are explaining why OP is root x.
ये रूट एक्स आता तो क्यों आता, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे अपन, राइट. दिस डिस्टेंस ओ एम इज, दिस x प्लस 1/2 इज टोटल डिस्टेंस m से लेकर b तक, and this OM will be x minus 1/2. Now if we join it, right, अब see, this is the radius, this is the radius of it, so this will be also radius, so x minus 1/2, this is the radius x plus 1/2, तो ये distance भी x plus 1/2. ये right angle triangle consider करो, only consider this right angle triangle. I will draw that triangle separately. Drawing this triangle. This triangle is P, O and M. This side is x minus 1/2. This we have to find, and this is x plus 1/2, and we have to find. Suppose this we are considering as a. Now a is equals to root x, we have to show. Apply Pythagoras theorem. Pm square means x plus 1/2 square is equals to, this square is equals to om square means x minus 1/2 square plus a square. So a square is equals to x plus 1/2 square minus x minus 1/2 square. Apply identity a plus b, a minus b. So a plus b in another packet, a minus b. You take the LCM here, we don't have space, तो अपन शॉर्ट में कर रहे हैं इसको. LCM लेंगे 2, तो 1 1 गेट कैंसिल, 2x/2 मतलब x आता है ना. And here also see x plus 1 minus x minus it becomes plus 1 upon 2. So x get cancelled, 1 plus 1 2, 2/2 means again it comes 1 only, means a square is equals to, this is a square is equals to x. So what is a then? Root x. That's why, and a is nothing but this OP. अपन इसको क्या कंसिडर किया था, a कंसिडर किया था, यहाँ क्या था, तो that's why OP is equals to root x. and OP root x है तो अपन राउंडर्स आर्क निकाल रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस जितना रहेगा उतना ही रेडियस ये भी रहेगा ना, तो that's why this distance is root x. Got it? Okay. Thank you. We'll see in the next video. Next exercise. Before that, I will give some introductory part. Then we start the next exercise. Exercise number, that is 1.3. Thank you.